Namaskar. Wish you a very, very happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. Dear friends, on this Independence Day, let's take a very, very beautiful message and let's cultivate it into our lives at our best possible level. स्वतंत्रता, यह दिवस एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे है because as the name implies, स्वतंत्रता, that is, let's invoke the divine force जो हमें स्व को, स्व means self, जो हमें स्व के तंत्र को सही तरीके से चलाना सिखाए. ऐसा कौन सा मंत्र है? What's that eternal secret? What's that eternal driving force which will help us immensely to free ourselves from the false, from various falsifications which are existing in our society? And before we talk about a society, we should talk about the inner self. What are those false beliefs? Rather, what are those myths which are leading to the overall degradation? That is the final step, actually, but it is leading to actually get tied up in the chains. This is sounding very, very horrific, but there's a very, very beautiful way, my dear friends, to get free from this. We will explore it today with a very, very beautiful song in the end of this video, I mean. So let's try to explore it. Before that, I wish to say some lines, 2 lines. That's actually the eternal desire of every human being, which will get illustrated very beautifully, especially on this beautiful day of Independence Day of our country. I am a kite, fly with me. I soar high up in the sky. With colorful tails like birds, I fly. Like this Indian flag, orange, white, green, as our flag is getting hoisted all over the country with eternal pride. Not only today, but every day. And it should actually hoist with eternal pride every moment within our hearts. Orange, white, and green. Next 2 lines are, I have many hues, like I symbolizing the kite, which we are actually calling for the self. I have many hues, red, blue, and green. Children run after me for my bright sheen. Isn't it really beautiful? If we say red symbolizes valor, vigor, inner power. Blue symbolizes peace. At the same time, blue also symbolizes knowledge or wisdom. Green symbolizes the beautiful eternal love which is flowing from the Supreme Father to every being across the globe. Now it depends on each of us how we are able to catch it, right? Aligning our frequencies after getting freed from all the impurities at every moment. This is the gradual process for every being, and then we can align the frequency with the eternal being, with the eternal Supreme Being, which is the eternal desire of every being, to get connected with His purity, with His sanctity, and yes, His pure love. So, if we consider ourselves as the kite and we wish to fly high,
obviously जिसको हम मांझा कहते हैं, the thread, the rope of the kite is within each of us. No one else is holding that rope. How to actually release it or actually pull towards ourselves so that we can drive safely, sail safely across our journey. Isn't it really beautiful? So every being, I mean to say, then everyone will get attracted to you once you actually radiate those beautiful qualities while doing the karma yoga. That is, while in the action field, if you stay in your inner self, in your original self, you will obviously radiate your fragrance of eternal virtues, of purity, peace, love, happiness, bliss, power, and knowledge. That is the wisdom, which is very beautifully getting symbolized or signified by those eternal hues of red, blue, and green, as we have signified, and that is the vigor, which when rains, it actually blossoms the entire globe. So this is the beautiful secret. Now, how to get cultivated it within ourselves? Here comes the beautiful essence, my dear friends. और यही एक beautiful तरीका है स्वर्ग को स्थापित करने का, एक paradise को establish करने का every moment. This is the beautiful secret. मैं अभी उसको बताने वाला हूँ. तो इसमें हम एक beautiful चीज़ एक और सीखते हैं, नर्क. नर्क का मतलब है न अर्क. अर्क मतलब इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. अर्क हम कहते हैं इतर. इतर दैट इज द सेंट व्हिच वी अप्लाई ऑन द सेल्फ, ताकि हमसे किसी सबको फ्रेग्रेंस आए. तो जिसमें खुशबू नहीं है, जिसमें कोई अर्क नहीं है, जिसमें कोई इतर नहीं है, वो है नर्क, और उसमें कोई अर्थ नहीं है. बट when we realize the meaning of our own existence and then we come into action, that will help in establishing swarg. And जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक ब्यूटीफुल एक लहर आती है. अब माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैसे इस्टेब्लिश करना है? अब आता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रैक्टिकल तरीका, जो हमें एक्चुअली इट इज़ द most needed aspect in today's society in order to prosper. And today I believe is the beautiful day, the most beautiful day I believe, Swatantrataa-Diwas. तो आइए इसको हम समझते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ईजी है, एंड बहुत डीप है, बहुत डीप है. आप हरि किसको बोलते हो? हर होता है हरने वाला. हरने वाला मीन्स जो हमारे कष्ट हरता है. हर मीन्स ले लेना, हर ले लेना. हर मीन्स हर ले लेना. तो हम उनको क्या कहते हैं? हरि. हरि बोल. उनको हम इसलिए बोलते हैं हरि बोलो. वो हमारे कष्ट हर देते हैं. दैट इज द अनदर नेम ऑफ गॉड which takes away our weak traits and fill ourselves. मतलब his beautiful remembrance fills us with the beautiful traits of keeping ourselves empowered every moment. That is the continuous practice. तो उनको हम इसलिए बोलते हैं हरि, या तभी बोलते हैं हरे राम, हरे कृष्णा, और एवरी डेटी के आगे हम हरि लगाते हैं. करेक्ट. अब इससे आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो हम आपको बताने वाले हैं. हरिजन. हरिजन, आप सबने ये वर्ड सुना होगा, ये टर्मिनोलॉजी you all must have heard about it. हरिजन हम कहते हैं आज की सोसाइटी में untouchables, which is the only reason, the only cause for our continuous falling. तभी कलयुग बढ़ रहा है ऐसी सोच से. नाम इतना ब्यूटीफुल, हरिजन. हरि सिंबलाइजेस गॉड, जन मतलब लोग, और वो हमारा क्या हरते हैं? ऐसे लोग ज़्यादातर क्लीनिंग करते हैं, सोसाइटी को क्लीन करते हैं.
बट हमने जो ऐसे स्टेचर्स बनाए हैं इन आवर सोसाइटी, that those who clean the society, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो ब्रूम लेके क्लीन कर रहे हैं, जिनके कारण हम सेफ रोड्स पे, क्लीन रोड्स पे घूम पा रहे हैं, अच्छे क्लीन हाउस में रह पा रहे हैं, अच्छे साफ कपड़े पहन पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जो क्लीनिंग कर रहे हैं, इवन जो बाथरूम्स क्लीन कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रोड्स पे जो गड्ढे में अंदर जाकर उसको क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, दे आर नेक्स्ट टू गॉड, आई बिलीव उनके भी हाथ पैर